हेलो। हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अकाउंट्स का वॉइस एक बार देख लो ना। वॉइस अकाउंट्स का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट। लगभग बेटा 15 से 20 मिनट लगेंगे और अकाउंट्स का 100 से ज़्यादा मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दूंगी। सबसे पहले इसमें एमसीक्यूज हैं, उसके बाद फिर फिलअप्स हैं, फिर ट्रू फॉल्स हैं, फिर मैच द फॉलोइंग है, फिर वन वर्ड है। तो 32 मार्क्स जो आपके हैं वो इसको करोगे तो पूरे के पूरे सिक्योर हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not an internal user of financial statement? मैनेजर, लेंडर, एम्प्लॉय या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंटरनल कौन नहीं है? लेंडर। लेंडर मतलब क्रेडिटर्स होते हैं, वो अपने इंटरनल यूजर्स नहीं होते। इन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैश एंड क्रेडिट? एक्रूअल बेसिस पे। विच गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट? द सेलर प्रिपेयर्स इनवॉइस। अनअर्नड इनकम, अनअर्नड मतलब क्या होता है? जो इनकम हमने अभी तक कमाई नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होती है। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज एडेड एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट इन ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, नॉट इन एनी कैपिटल, नन ऑफ दीज। तो जब अपन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज एडेड एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग आउट क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करते हैं। Errors are rectified in general, proper. How many types of accounts are there? Real, personal, nominal. 3. What is the last step of accounting as a process of information? Recording of data, preparing, summarizing, communication of information is the last. Purchase return account is personal, real, general. Real है. The primary quality that makes accounting information useful for decision making is relevant तो होता है लेकिन freedom नहीं है, reliability, compatibility, compatibility में consistency नहीं होता है, तो ये B होगा इसका आंसर, reliable and comparable. Then a purchase of machinery for cash should be debited to, मन में एंट्री सोच के देख लो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट क्या हो रहा है? मशीन। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैश, गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल। द सम ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल इज एसेट। सम मतलब प्लस करना होता है। द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज वाउचर, वाउचर बेस होता है। Drawing falls under which account? Personal account. The balance of goods account is transferred to trading. Goods मतलब purchase या sale. Which account is opened first in ledger books? Personal. The art of recording all business transaction in a systematic manner. Bookkeeping. In India, accounting standard 1977. As per American belief, American मतलब मॉडर्न मेथड की बात कर रहा है। 5 होते हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। 5। अ चेक ऑन विच 2 पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं, तो बियरर तो नहीं हुआ, ट्रैवलर भी नहीं हुआ, अकाउंट पे ही चेक हो जाता है वो। नेक्स्ट फिलअप्स पे आते हैं। लगभग लगभग बेटा अपन ने 22 एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब अपन फटाक से फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। सस्पेंस अकाउंट इज टेम्पररी। Provisions are written on credit side. Credit note is sent to creditor. Bank reconciliation statement is prepared by
businessman. Dash method is suitable for charging depreciation on plant and machinery. WDV, written down value. Trial balance is a test of arithmetical accuracy. Indirect expense are entered in profit and loss account. Goods given in charity is credited in purchase account. Due to credit purchase, creditor and dash are increase purchase. Contra entry is made in cash book, वो भी कौन सी? डबल कॉलम. Then the transactions of dash are recorded in sales book. Credit sales. Cash column of cash book will always have positive या डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हो. डेबिट बैलेंस. कैपिटल अकाउंट इज होमोजीनियस ऑफ लाइबिलिटी. सेम लाइबिलिटी के जैसा उसका. होमोजीनियस मतलब सेम, किसके समान है. द नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू या तो ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट. जनरली डैश does not form a part of trial balance. Closing stock. Closing stock does not form gross profit or loss is transferred to dash account. जीपी जो है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर होती है. देन नेक्स्ट पे आते हैं. while calculating profit, drawings will be added to closing capital. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. लगभग 22 अपन ने फिलअप्स कर लिए हैं. नेक्स्ट चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे. 10 मिनट भी नहीं लगने वाला है और आपका ये पूरा कवर हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव 32 मार्क्स है बेटा. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन एक्सपेंस. ट्रू. सिंगल साइड एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट. ट्रू. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम फॉर बिजनेस. फॉल्स. खर्चा है. ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज आर रिजिड. फॉल्स. फ्लेक्सिबल होती है. An order for sending goods is not a business transaction. False. A balance of cash book is always debit. True. पर अपना ये assumption है कि अपन सिर्फ कैश कॉलम की बात कर रहे हैं. Interest on capital is deducted from capital. False. कैपिटल में प्लस होता है. Prepaid expenses asset. True. Adjustments are recorded in trading profit and loss and balance sheet only. True. Unaccrued income, income earned but not received. Liability side दिखाते हैं. Outsourcing personal है. True. When closing stock is shown in trial balance, then it appears in balance sheet only. True. Normally closing stock balance sheet में नहीं आता है. Then suspense account is permanent account. False. टेम्परेरी होता है. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट. फॉल्स. लॉस हो या प्रॉफिट हो, डेप्रिसिएशन हमेशा ही लगता है. प्रोफेशनल पीपल मेंटेन देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू कैश सिस्टम. ट्रू. प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन सिंगल एंट्री सिस्टम. फॉल्स. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है. Final accounts are not affected through rectification of error. False. Bad debt reserve is a loss. True. Drawing of goods is deducted from purchase. True. वन वर्ड पे आते हैं. लगभग 20 एक अपन ने ट्रू फॉल्स भी कर लिए. When two errors nullify each other effect, then such error is called compensatory error.
Debtor account always show debit balance. Unearned income is shown in which side of balance sheet? ये अपन ने ट्रू फॉल्स में भी किया था और फिलिप्स में भी किया था, लाइबिलिटी साइड. Then what is the nature of interest on investment? Nominal, क्योंकि ये इनकम है. Give an example of current liability, creditor, outstanding, कुछ भी लिख सकते हो. What are the expense called which are posted in profit and loss account? Indirect expense. Next पे आते हैं बेटा. Who is father of double entry system? Lucas Pacioli. 1944 में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया था. रिपेयर एक्सपेंस ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. रिपेयर है लेकिन अपन ने कहाँ डेबिट कर दिया? फर्नीचर पे. एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये. सेल ऑफ गुड्स टू रोहित फॉर कैश इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? कैश, क्योंकि पैसा आ रहा है. राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग COGS. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी प्लस हो जाएगा. Which type of transactions are recorded in purchase book? Only credit purchase are recorded in purchase book. How many columns are there in ledger? सबसे पहला डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर LF का, फिर अमाउंट का, ऐसे करके वापस. तो टोटल 8 कॉलम हो जाएंगे. How many types of reserves are there? 2 types, general reserve or special reserves. The balance of debtor account is always positive. या डेबिट भी लिख सकते हो. डेबिट ज्यादा बेटर आंसर होगा, पॉजिटिव गलत ही होगा. Then opening and closing stock of finished goods are shown in trading account. Closing stock is valued on cost or MRP, whichever is less. What are the expenses incurred for bringing goods to saleable condition called? Direct expense. The balance of which account are shown in balance sheet? Personal और real, दोनों के, and real. When are rectifying entries passed? In case of error. Mention an account which can show debit and credit balance. बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. The statement of assets and liability is called balance sheet. The expense written in P&L account are called indirect expense. और जो ट्रेडिंग में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस. अब अपन कर लेते हैं लास्ट मैच द फॉलोइंग. 3-4 मैच द फॉलोइंग है, वो करके वीडियो को एंड कर देते हैं. चलिए, बिल्डिंग. तो सबसे पहले हमारी बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है. क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है. डेटर हमारे लिए करंट एसेट्स है. पेटेंट हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट है. डेबिट नोट डेटर को देते हैं, क्रेडिट नोट क्रेडिटर को देते हैं, और लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है. बिल्डिंग 1 यहां लिख देती हूँ. सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी 2 लिख देती हूँ. सन्ड्री डेटर 3 लिख देती हूँ. इंटेंजिबल एसेट 4 लिख देती हूँ. पेटेंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अनअर्न्ड इनकम ऑफ करंट ईयर. हॉस्पिटल. हॉस्पिटल तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो गया आपका, थर्ड. देन मैनेजर प्रोफेशनल हो गया. गुडविल इंटेंजिबल एसेट हो गई, फिफ्थ. अब बचता है अनअर्न्ड इनकम ऑफ करंट ईयर. ये तो बैलेंस शीट में जाएगा.
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएगा 1. मैच द फॉलोइंग. बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, वैल्यू ऑफ एसेट टू 0 फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे होता है ये 2. देन ट्रांजेक्शंस ओमिटेड इन बुक्स, error of omission 3rd. Then charge on profit and loss, charge on profit and loss. सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी होता है, ये तो एकदम श्योर है. अपन जो सबसे पहले श्योर है बेटा तो कर लेते हैं. 1 एरर कंपेंसेटरी 6th वाला. क्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, रिजर्व जो है वो प्रॉफिट से ही बनता है. प्रोविजन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. और बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है. फिर से बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस, 0 वैल्यू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ट्रांजेक्शंस ओमिटेड, एरर ऑफ ओमिशन, चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाएगा अपना प्रोविजन. देन सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है जो न्यूट्रलाइज हो जाता है, कंपेंसेटरी है. क्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, रिजर्व. आई होप ये 15-20 मिनट के वीडियो में आपका पूरा MCQ फिलअप्स 1 वर्ड रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि 11th की भी डिमांड आ रही थी कि मैम एक बार MCQs करा दीजिए. तो ये मैंने लाइव वीडियो डाल दी हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा. ऑल द बेस्ट, डू वेल, हैप्पी होली. थैंक यू.